जो है इसमें ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन सिस्टम लगा है, यानी मोटरमैन के बटन दबाते ही ट्रेन अपने आप अगले स्टेशन के लिए मूव करेगी। आप इस पूरी यात्रा में कितने जो गंतव्य स्टेशन हैं वो आएंगे? देखिए, अगर हम यहाँ से एक्सप्रेस से देखें और हावड़ा जो मैदान मेट्रो स्टेशन है, अगर उसके बीच में देखें तो 3 मेट्रो स्टेशन है जो आएंगे और उसके बाद आप अपने गंतव्य पर पहुंच सकते हैं। और ये जो दूरी है वो मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 मिनट के अंदर ये तय होगी। और जो नदी वाला हिस्सा है, खासतौर से जो होगी नदी के नीचे से जो मेट्रो जा रही है, जो टनल से होकर, वो मात्र 45 से 50 सेकंड के बीच में उस हिस्से को। वाहन प्रदूषण से निपटने के लिए जिस तरह से इस अंडर वाटर मेट्रो रेल का आज उद्घाटन किया गया है, आप ये समझिए कि ये कितना अहम होने वाला है। तो परिचालन शुरू होने के बाद अब हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन जाएगा। और इस मेट्रो स्टेशन के बनने से पर्यावरण को तो फायदा होगा ही, लेकिन लोगों को कितना फायदा होगा ये आने वाला वक्त तो बताएगा। लेकिन जिस सेवा का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया, उससे पहले जायजा लिया प्रधानमंत्री ने कि कैसे ये जो पूरी परियोजना है ये मूर्त रूप इसे दिया गया। समय सुनिश्चित जो किया गया था, जो समय सीमा सुनिश्चित की गई थी, उसी समय सीमा के अंतर्गत ये इसका जो निर्माण है वो किया गया है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इसे हरी झंडी दिखाई है, आप देखिए ये उसका जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। अंडर वाटर जो मेट्रो रेल है और भारत में किसी भी नदी के नीचे बनने वाली ये परिवहन सुरंग जो है वो अपने आप में अनोखी है। हमारे साथ बात करने के लिए नीरज जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। नीरज, तो आखिरकार जिस अंडर वाटर रेल परियोजना मेट्रो रेल की हम बात कर रहे थे, उसका शुभारंभ प्रधानमंत्री के करकमलों द्वारा किया गया है। पर्यावरण के लिहाज से तो साथ में हम मान ही रहे हैं, लेकिन यातायात का एक अहम और सुगम साधन बनेगी ये मेट्रो रेल। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि अगर आप पश्चिम बंगाल के शहरों में अगर देख रहे हैं, कोलकाता और हावड़ा, ये दोनों ही शहर ऐतिहासिक है और काफी महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि काफी ज्यादा कंजेस्टेड भी है और भीड़ भाड़ भी यहाँ पर बहुत है। जो लोग कोलकाता से हावड़ा के लिए जाते हैं या हावड़ा से जो कोलकाता के लिए आते हैं, तो यातायात में काफी जो समय है वो बिताना पड़ता था। करीब करीब अगर पीक आवर्स में आप देखें तो 1 घंटे से ज्यादा का समय लगता था, क्योंकि इतना ज्यादा जाम यहाँ पर रहता था। इसके साथ ही जो ध्वनि प्रदूषण क्योंकि इतनी गाड़ियां रहती थी, उनकी हॉर्न, तो वो भी एक कह सकते हैं कि एक बड़ी परेशानी था समझता। और यहाँ पर जो वातावरण में जो प्रदूषण है, गाड़ियों का जो धुआं निकलता था, इससे भी तमाम दिक्कतें होती थी। और आप ये देखिए कि हावड़ा स्टेशन से लेकर अगर एक्सप्रेस स्टेशन की अगर हम बात करें तो कुछ ही मिनटों के अंदर ये दूरी तय हो जाएगी। आप कल्पना करिए कि आपको 1 घंटे का सफर करना है और आप 5 मिनट के अंदर आप मुख्य जो शहर है कोलकाता या हावड़ा, वहां पर आप बड़ी संख्या में जो लोग हैं जो कोलकाता में कामकाज के लिए हावड़ा से यहाँ पर आते हैं और हावड़ा से जो दूसरी जगह पर, कोलकाता की दूसरी जगह पर जाते हैं, क्योंकि यहाँ से इंटरकनेक्ट किया जाएगा पूरे मेट्रो रेल लाइन से। तो ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है इस पर तो शुरुआत हुई है देश के दूसरे शहरों में भी। अब आपको अच्छा नीरज, देखिए अपने दर्शकों को बताएं, आपको रुकना चाहेंगे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जो इस मेट्रो रेल में बैठे हैं, यहाँ पर बच्चों के साथ जो छात्र हैं उनके साथ देखिए किस तरह से हंसी खुशी संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री का जो ये एक हम मान सकते हैं उनकी पर्सनैलिटी और उनके व्यक्तित्व का ये एक अलहदा रूप हमेशा हम देखते हैं कि जब भी इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित किए जाते हैं उससे जुड़े लोगों से तो बात करते ही है, संवाद करते ही है, साथ ही साथ जो जैसे मान लीजिए किसी ट्रेन की अगर बात की, जैसे हरी झंडी दिखाई गई है, जैसे मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखाई गई है, तो इसमें सवार जो लोग हैं उनसे भी मन की बात करते हैं। और छात्र जिन्हें हमेशा वो राष्ट्र निर्माण की धुरी मानते हैं, उनके साथ संवाद करते देखिए आप प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। खुद उन्होंने जो वहां छात्र थे उन्हें पास बुलाया और बिठाया और उनसे जिस तरह से एक अभिभावक बात करता है उस तरह से प्रधानमंत्री बात करते हुए खुलकर बात करते नजर आ रहे हैं। और बच्चे भी जो छात्र वहां मौजूद हैं वो उनसे खुलकर अपने दिल की बात जैसे कि एक बड़े से अपने अभिभावक के तौर पर करते हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो प्रधानमंत्री का अंदाज बयां है उनके व्यक्तित्व के लिए उन्हें कई लोगों से अलहदा बनाता है। और इसीलिए आप समझिए कि कोई भी अगर आप
काम जो कि विकास से जुड़ा हुआ है, जब वो आप देश को समर्पित करते हैं, राष्ट्र को समर्पित करते हैं, और जिन युवाओं से हमें आशा है, आकांक्षा है कि वो देश का भविष्य बदलेंगे, हम उनके साथ संवाद करते हैं, तो उसका कितना अहम और सार्थक परिणाम निकलकर सामने आता है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए लोग बेसब्री से मोबाइल में एक उनका फोटो आ जाए, देखिए कैसे उनका इंतजार कर रहे हैं। और ये क्योंकि सभी परियोजनाएं कनेक्टिविटी से संबंधित है, ये जो युवा हैं, ये जो आगे चलकर कई इनमें से एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, उनके लिए देखिए कनेक्टिविटी के लिहाज से आज का दिन बड़ा कि कहीं पहुंचने के लिए अब उन्हें बसों का इंतजार ना करके मेट्रो रेल परियोजना का ये अहम सौगात जो है वो मिली है। प्रधानमंत्री हमारे साथ नीरज जुड़े हुए। नीरज, जो हम दृश्य दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, उसमें प्रधानमंत्री इसी मेट्रो रेल में हैं और बच्चों के साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब भी प्रधानमंत्री कोई भी विकासात्मक योजना को राष्ट्र को समर्पित करते हैं, उससे जुड़े लोग या उसमें सफर कर रहे लोगों से हमेशा संवाद स्थापित करते हैं। बिल्कुल यही खूबी है। और आप देखें कि सिर्फ यही नहीं, प्रधानमंत्री जहां जहां जाते हैं यूथ के साथ उसका जो कनेक्ट है वो अलग तरह का रहता है। वो सीधे जाकर अपनी जो बात है वो रखते हैं, और इसके अलावा जो यूथ है उसकी बात सुनते भी है। आप देखें कि बड़ी संख्या में जो युवा है उनको फॉलो भी करते हैं, और उनके एक आवाज पर या उनकी एक अपील पर लाखों करोड़ों की संख्या में जो युवा है काम करने के लिए तैयार रहते हैं। आप देखें कि प्रधानमंत्री जो युवा है उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और ये तमाम चीजें हैं कि उनको पढ़ने में कितनी सुविधा होगी इस मेट्रो ट्रेन से, कैसा लग रहा है। पहले जो सफर आप कोलकाता से हावड़ा के बीच में करते थे, तब कितनी दिक्कतें आती थी, अब कितनी परेशानियां आपकी दूर हुई है। तो निश्चित तौर पर ये दृश्य अगर बताते हैं कि प्रधानमंत्री युवा से सीधा कनेक्ट करते हैं। और चूंकि आपने वो दृश्य भी देखे होंगे आचल, जब काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था, और उस समय जो श्रमजीवी थे जिन्होंने दिन रात मेहनत कर इस कॉरिडोर को बनाया था, प्रधानमंत्री उनके बीच में पहुंचे थे, और आपने देखा कि किस तरह से उनके साथ बैठकर कुर्सियां लगाई गई थी, उन्होंने हटा दी, और उन श्रमिकों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री संवाद कर रहे थे। तो ये दृश्य बताते हैं कि श्रम कितने ज्यादा सक्रिय जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो उनके योगदान को बढ़ाया जाए। हमने सिर्फ काशी विश्वास कॉरिडोर में नहीं देखा, और देश के अलग अलग हिस्सों में जो तमाम परियोजनाएं होती है, प्रधानमंत्री खुद उन श्रम वीरों के उनसे संवाद, उनके मत का ही नतीजा है। और इंजीनियर एक डिजाइन होते हैं, लेकिन उस डिजाइन पर काम करने वाले श्रमजीवी। Have you still not joined our 6 days reading challenge? We noticed you've been checking out our ads. को समर्पित की गई, तो उनसे जुड़े जो तमाम ऑफिसर्स थे उनके साथ प्रधानमंत्री ने बात की, जो उसमें सफर कर रहे लोग थे, जो पहला सफर कर रहे थे, उनका अनुभव जाना। ये अनुभव जानने की जो प्रक्रिया रहती है प्रधानमंत्री की, ये कई और अनुभवों को जन्म देती है, कई ऐसी सीख है जो अन्य राज्यों के लिए कहीं ना कहीं एक मॉडल के रूप में स्थापित की जा सकती है। और देखिए क्या पता इनमें से कई ऐसे छात्र हैं जो आगे आने वाले समय में इस तरह की मेट्रो रेल का डिजाइन जो है वो बनाए, जिस नवोन्मेष की प्रधानमंत्री बात करते हैं, जिस एंटरप्रेन्योरशिप की प्रधानमंत्री बात करते हैं, जिस स्किल डेवलपमेंट की प्रधानमंत्री बात करते हैं, वो अपने आप में यहां आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से संवाद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये वो आशाएं हैं इन छात्रों के आंखों में जो साफ नजर आती है, जो खुशी है जो वो जाहिर कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल आचल, आप देखें कि जो अनुभव है, इन्हीं अनुभव के आधार पर भविष्य की जो दूसरी परियोजनाएं वो तैयार होती हैं। आप देखें कि जिस समय गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री ने हो सेवा जो शुरू की थी, तो खासतौर से जब आप नदी से जहाज लेकर या पानी का जहाज आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो छोड़ता है, तो एक लंबी जो दूरी तय करनी पड़ती थी रोड से, वो कम हुई। और उसी से ये कह सकते हैं कि भविष्य में एक ऐसा आधारशिला रखी गई कि भाई मेट्रो अगर ऐसी बनाई जाए कि नदी के नीचे से अगर हम मेट्रो को ले जा सकें, तो 10 साल प्रधान सेवक के नाते इस परिवार के लिए जो वो भारत कहते हैं,
उस परिवार के लिए जूझते जूझते परिश्रम करते करते आज राजनीति के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने यह कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की तो कहना चाहती हूं, हम हैं मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार। बोलो उससे, कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? अरे जिसका परिवार 140 करोड़ का है उसका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। अगर 140 करोड़ जनता उनकी परिवार होती, जो कहते हैं ना भारत मेरा परिवार है, तो इतना अन्याय क्यों किया है किसानों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, श्रमिकों के साथ? इतना अन्याय हुआ है। भविष्य में अमृतकाल के सपने दिखाई दे रहे हैं। पिछले 10 साल में इन्होंने क्या किया है? अन्याय काल। अपने ही परिवार से अन्याय। ये तो मार्केटिंग के लिए है, प्रचार के लिए है, रीब्रांडिंग के लिए है। After forensic report confirmed that pro-Pakistan slogans were raised in the Karnataka Assembly, Bengaluru police has cracked down the suspects. The police have arrested 3 accused from 3 different locations. Accused number 1, Mohammad Shafi, was arrested from Haveri district in Karnataka. Accused number 2, Munawwar, was arrested from Bengaluru. And third accused, Iltiyaz, was arrested from Delhi. The police claimed that the arrests were made based on forensic report, circumstantial evidence and statement of witnesses. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. One of the accused, Mohammad Shafi, was also seen with newly elected Rajya Sabha MP Nasir Hussain, and an image of the two has also emerged. Accused Shafi claims that he was raising Nasir Sahab Zindabad slogans. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಾಸಿರ್ ಸರ್ ಅವರ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿದ್ರು, ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಜಯವಾಗಲಿ, ನಾಸಿರ್ ಖಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬೇರೆ ಆರೋಪಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಈ ಥರ ನಾನು ಯಾವುದೂ ಸ್ಲೋಗನಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ನಾನು ಸ್ಲೋಗನ್ ನಾನು ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲ. The Karnataka BJP has sought MP Nasir Hussein's resignation immediately and wants the Congress to be probed under UAPA. Every day you see headlines and get to hear questions about India's economic growth. And the big headline really is how fast is India growing and what is its rank in the global economic firmament. And the key point, if we can look at the data, is that India continues to be the fastest growing economy in the G20 nations. You heard that absolutely right. The group of 20, the most powerful 20 nations, within which there is of course a smaller grouping called the G7, but in the G20, India is the fastest growing economy. And it doesn't make it only the top performing economy in Asia, but the fastest growing economy in the G20, which is spread all over the world. So how is this happening? Let's first take a look at some of the key data that will show you the relative position and the growth of India. The first data that I want to show you is with regard to Asian countries, and look at the GDP of the Asian countries that is right there on your screen. At 18.5, almost $19 trillion, China remains the largest by far in Asia, and of course again globally as well. But
after the United States. And if you look at China and its growth rate at 4.2%, followed by Japan and then India. The third largest in terms of GDP is India, but please note the growth rate of India, 6.3%, which has now been updated to 6.8% by Moody's. Other observers are saying 6.9%. The government of India expects 7%. We are possibly in a situation where this rate of growth will be even faster than what it is being projected on the screen. And then, of course, Indonesia and Saudi Arabia at the fifth. So note the key point with regard to India's growth. Our rate of growth is the fastest, and therefore, very soon, we will surpass Japan to become the second largest economy in Asia. And I continue to focus on Asia primarily on account of the fact that a very large mass of growth, global growth, people and future aspirations exist in Asia. The developed world has enjoyed supremacy for hundreds of years, but for a variety of reasons, the pivot to growth is happening in Asia, and that's why India remains the top performing growth rate wise economy in Asia. Now look at Singapore, Bangladesh, Iraq, Iran, and perhaps Pakistan does not even bear mention here because they are very small. Singapore, if you look at it in terms of territory, a very small island nation, but punches way beyond its weight, and that kind of overall GDP is very, very significant. Look at Bangladesh. So the only two countries with 6% plus growth in the top 10 in Asia that we have shown you is India and Bangladesh, not Pakistan. Pakistan is in the doldrums. They now have a new government. It's old wine in a new bottle, and it's a mix of various compromises, political compromises that have been dictated by the Pakistan army, which is the real power behind the throne and in fact on the throne as well. And Pakistan's economy not really up for comparison by any chance, although many people in Pakistan would like to delude themselves and try and compare with India, but they are just there because they are a neighbor, a pesky neighbor at that. But other than that, Pakistan really doesn't even figure anywhere in the overall list of rankings. Bangladesh, which we helped break away from Pakistan, get them their independence, growing much faster than Pakistan, and the second highest growth rate in Asia is Bangladesh. Now take a look at what's been happening for the past 2-3 years, and that will tell you why India remains the top performing economy in Asia as well as globally. The key feature to note here when it comes to the data is the fact that it's not a one-off. The most recent quarter data that came for India at 8.4% was way behind estimates, and that's why I told you earlier that we are likely to be closer to 7% than before. Now look at growth trends over the last 3 years. 2021 COVID year, post-COVID year, 2022, 2023, the rate of growth. China, see the very sharp dip that has happened post-COVID and other problems that they seem to be having in their country. In fact, they have now cancelled their annual press conference, which was held by the Prime Minister and used to be seen as an annual press conference where a lot of their economic policy direction could be gauged by journalists. That's been cancelled. It's unprecedented, hasn't happened in the past as far as China is concerned, and that also sends out concerning signals, not only about the growth in China, but about their overall political system right now. Japan, look at the growth rates. That country, of course, a powerhouse, but you can very clearly see that being left behind. Saudi Arabia also, after a very good 2022, seeing a dip. Now, this is why you can see that India remains in a very, very sweet spot, and that's why most rating agencies, analysts, brokerages, foreign banks, everybody, companies are talking about India's potential. And why is India growing at the fast rate that it is going? You have to go back to COVID, which perhaps in some ways was
a pivotal moment for the entire global economy and India in particular. Two things happened post-COVID. Much of the developed world responded with massive stimulus, including the United States. They printed a lot of money and pushed it into their economy. Growth came back. The post-COVID recovery was faster, but it came at a very, very significant price, which was very high prices, because there was so much money, so much liquidity out there in the system. Prices went through the roof, and Americans, for example, have seen a cost of living crisis which they have never seen in almost a generation. Now that led to another multi-billion dollar Inflation Control Act, but that's a separate story. What happened in India? The government of the day was quite conservative fiscally. It did not throw money because it said, let the economy come back and we will provide targeted support. Of course, there was a lot of suffering also. The migrant laborers crisis that happened, that lasted for some months. That was a very, very big humanitarian issue, but that also shows how human capital works in urban India and resides in Bharat, in our villages, and that was specific to that situation. Again, government spending through various programs, including the farm wage initiative that is done, also provided some sort of help. The second bit is infrastructure spending by the government of India. All these massive flyovers, bridges, highways, the upgrade of railway stations, the other associated infrastructure rollouts that we have seen in the past 10 years, a part of Modinomics really, that massive infrastructure spending has led to a lot of money being spent in various sectors, and that has trickled down into the economy. We have also seen that inflation, because of certain set of policies, including retail inflation, has been tapering off, coming down slowly. The government of India has taken the hit of petrol and diesel price increases. It has not passed it on almost for the 1.5 years and more, and that has kept inflation down. What we have also seen is that while the government is spending, we've also seen very significant increase in tax collections, and that goes back to other reforms, including the introduction of GST, for example. Very high indirect tax collections also being ascribed as a reason for the recent quarterly GDP growth increase that India has seen. Direct tax reforms, digitalization, the fact that the income tax department now has far better tools and goes after evaders far more strictly than in the past. All of that has led to much more revenue collections for the government of India, that obviously being spent. Of course, the government continues to borrow, but it has been conservative in that regard, and that is why international observers praise India's handling of the economy in the post-COVID phase, and that is bearing fruit. A lot of foreign investment is coming in. Private sector investment in India, which is our large corporations, which had kind of slowed down very significantly, and that goes back to 2012, 2013, 10, 12 years ago, when there was a big crisis of confidence also, and that led to a big problem with bank loans to many companies. Those companies could not pay back their loans in time. That was called the NPA bubble. That has also been dealt with, and the public sector banking system, which had borne the brunt of that, is now in far better shape than we have seen it for perhaps many decades now. So all of that, government spending, lower inflation, infrastructure, private sector now borrowing money from banks to expand on its projects. In fact, RBI data shows that credit private sector has gone up 23%, and that is very good because it now pre-COVID level. So all of that put together means very clearly that ab ki baar 7% par is the key thing that a whole lot of observers are expecting. 4 lakh crore or $4 trillion is a target that's already been achieved. The next target is $5 trillion, and that is likely to be achieved in 3 or 4 years. But that's very clear that as far as India is concerned, it remains a bright spot, not just in Asia,
but across the world. And imagine once we have Lok Sabha election results that come in, as expected policy, government continuity, a third term for Prime Minister Modi, the same set of policies flowing in. And if you've seen, a roadmap has been drawn up by the government that is to be implemented soon after the elections, and that will also add to some of the growth impetus continuing. So all in all, a very good picture as far as India is concerned, and in economic terms the key slogan being ab ki baar 7% par. I'll see you again. Until then, goodbye.